Good morning, students. Welcome back to SST class of class 4. Today we will start a new chapter, chapter number 8, the coastal plains and islands. We will learn about the coastal plains and islands. Let's begin the chapter. The coastal plains. The southern plateau cover most of the southern India. They are bordered by narrow coastal plains on the eastern and the western side. You can see the coastline of India. Here it starts from West Bengal, extended up to the southern part, that is, this is the Indra Point, and then again extended to Gujarat in the west. So it starts from the eastern side, from the West Bengal, and stretch up to Gujarat in the west, and it is divided into two parts, the eastern coastal plains and the western. A coast is the land beside or near a sea or an ocean. India has a long coastline stretching from West Bengal in the east, going all around the Indian peninsula up to Gujarat in the west. You can see in the picture that how Indian coastline starts from West Bengal and stretch up to Gujarat, and it is divided into two portions, that is the eastern coastal plain and the western coastal plain, as I told you earlier. Do you know what is a coast? कि coast क्या होता है? Coast एक ऐसी जगह होती है जो पानी के पास होता है, जिसके पास कोई भी वाटर बॉडी आसपास प्रेजेंट हो, कोई सी या कोई ओशन. India is in peninsular region that is surrounded with water from three sides. Peninsular region वो region होता है जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है. You can see from the western side India is surrounded by Arabian Sea, and from the eastern side India is surrounded by Bay of Bengal, and the southern side India is surrounded by Indian Ocean. So India is having a peninsular part. The main advantages of a long coastline are: ports can be set up and ships can be used to transport large quantities of goods within and outside the country. Long coastlines have encouraged fishing as an economic activity. It is the main occupation of the people living in the coastal areas. You can see in the picture that how a port is built near a sea or an ocean at the coast. मतलब जहाँ पर कोस्ट लाइन होती है वहीं पर हम क्या बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं. पोर्ट क्या होता है? वहाँ पर जहाँ पर शिप्स पार्क होती हैं, शिप में सामान चढ़ता उतरता है, दैट इज पोर्ट. तो यहाँ से हम अपनी कंट्री में या किसी और देश तक बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स पहुँचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट. As in sea we find many sea animals और marine animals I can say. तो वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन ही वो बन जाता है दैट दे आर कैचिंग द फिशेस, एंड फिशेस इज वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं. पीपल ओवर देयर ईट फिशेस, वो लोग फिशेस खाते हैं. सो फिशेस या कोई भी मेराइन एनिमल खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर हो रहा है, क्योंकि इससे देश को पैसा मिल रहा है. क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो उसके लिए पैसे देते हो, तो सेम वाइज वो भी क्या हो गया है, एक तरीके से लोगों का ऑक्यूपेशन बन गया है, काम बन गया है कि फिशिंग करना, फिशेस को कैच करना और फिर से सेल आउट करना. सो फिशिंग इज एन economic activity of the people living near coastal areas or in coastal areas. The coastal plains are divided into two parts: Western coastal plain between the Arabian Sea and the Western Ghats, Eastern coastal plain between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. The coastal plains meet at the southernmost tip of the Indian peninsula at Kanyakumari. Here you can see in the picture that western coastal plain is there in between of the Western Ghats and the Arabian Sea, and the eastern coastal plain is between Eastern Ghats and Bay of Bengal. And here it is the tip of the India, and this is the most southern point, and here it is in Kanyakumari. The southernmost point of India is situated in, or it is in Kanyakumari only. The western coastal plain.
The western coastal plain originates from Gujarat in the north and passes through Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala. It is divided into three main parts: the Gujarat coast in the north, the Konkan coast in the middle, and the Malabar coast in the south. So here in the picture you can see that it's here start from the Gujarat coast, then here come the Konkan coast, then Goa, here it is Goa, and then here it is Malabar coast, and then it is the Kanyakumari. So the Western Ghats are divided into three parts: the Gujarat coast, Konkan coast, and Malabar coast. Western coastal plain, Gujarat coast in the north. It lies between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khammar. You can see in the picture that Gujarat coast starts from the Gulf of Kutch from here, and it is full till here. Gulf of Khammar, then Gulf of Kutch से start होगा और थर्ड के coast है इसका Gulf of Khammar तक, यानी ये सारा एरिया किसको बिलोंग करता है? गुजरात कोस्ट. Konkan coast in the middle. It extends from the Gulf of Khambat up to Goa. It is rocky and narrow, and the hills go up to the seashore at many places. Lighthouses have been built along the coast. Many harbors are found here. Mumbai is the biggest commercial port on the Konkan coast. You can see in the picture where the Gulf of Khambat ends, and here the Konkan coast starts from Gulf of Khambat till गोवा. यहाँ तक गोवा है, वहाँ तक कम्बक कोंकण कोस्ट लाई करती है. यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या पड़ता है, पोर्ट पड़ता है, उसका नाम है मुंबई पोर्ट. Here you can find harbors. Harbors क्या होते हैं, कैसे एरिया जहाँ पे शिप्स पार्क करी जाती हैं. हार्बर क्या होता है, एरिया वेयर द शिप्स आर पार्क्ड और केप्ट एट अ सेफर प्लेस so that they can be loaded with goods, जो वो goods से भरी जा सके. So you can see here it is an मुंबई पोर्ट. ये मुंबई पोर्ट है जहाँ पर सामान लोड होकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है या हमारी कंट्री के विदिन ही सप्लाई होता है. Malabar coast in the south. It lies to the south of the Konkan coast and extends from Goa to Kanyakumari. As the coastline approaches Kerala, a large number of lagoons are found. They are known as backwaters and are a tourist attraction. So Konkan coast खत्म होती है कहाँ पर? Will tell me. कॉन्कन कोस्ट ख़त्म होती है गोवा पर. अब गोवा से स्टार्ट होती है हमारी मालाबार कोस्ट एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द सदर्न पोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी. और ये कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करती है. और बीच में क्या पड़ता है, क्योंकि सारी कोस्ट कहाँ से होती है, गोवा से लेकर केरला तक. तो यहाँ पे पड़ते हैं लगून्स. लेट मी शो यू व्हाट आर लगून्स और वो कैसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाते हैं. So here in this picture you can see the backwaters of Kerala, and they are having too much greenery and some houseboats. So these are the major attraction of tourists. So whoever visit Kerala always visited these backwaters to have a ride in these houseboats. The eastern coastal plain. On the east, between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal, is the eastern coastal plain. It originates from West Bengal in the north and passes through Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. It is divided into two main parts: the northern Saras in the northern part, and the Coromandel coast in the southern part. Here you can see in the picture that this portion is northern Sarar, and this is at the southern part, this is Coromandel coast.
It starts from the West Bengal and it reaches to Tamil Nadu, covering Andhra Pradesh and Odisha also. The importance of the coastal plains. Now we will learn about कि coastal plains क्यों ज़रूरी है. Ports and harbors on the coast help the country to engage in large-scale trading, both inland trade and foreign trade. Now ports और harbors जो होते हैं वो हमारी कंट्री को ही हेल्प करते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, जो हमें फॉरेन ट्रेड और हमारी खुद की कंट्री की ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. States like Kerala, Tamil Nadu, Goa, which are close to the sea, have beaches. These attract tourists. अभी ये लोग क्या है, जहाँ भी ये वाले स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, गोवा, अब यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, फेमस बीचेस हैं, जहाँ पे टूरिस्ट का एक मेजर अट्रैक्शन रहता है, लोग घूमने आते हैं यहाँ पे. सो दिस ऑल्सो एड्स बेनिफिट टू द कंट्री एज द इनलैंड पीपल एंड फॉरेन पीपल, बाहर के लोग भी और हमारे देश के लोग भी सब यहाँ घूमने आते हैं. Fishing and shipping are important economic activities. These provides livelihood to many people. Now यहाँ पर लोग क्या करते हैं काम में, सबसे ज़्यादा फिशिंग करते हैं और कुछ लोग शिपिंग करते हैं. अब शिपिंग कौन करते हैं, अब जो लोग फिशिंग करते हैं वही वैसे ही कुछ लोग शिपिंग करते हैं. शिपिंग का मतलब क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ शिप्स आपको देखने को मिल सकती है, जिससे वो लोग पैसे कमाते हैं और अपना लाइफस्टाइल अर्न करते हैं. As the land, especially the delta region of Kaveri, is fertile, the rice and plantation crops are cultivated. In fact, the Kaveri Delta is known as the rice bowl of South India. Now, ये जो लैंड है हमारा, जितना भी सदर्न लैंड है, यहाँ पे क्या पड़ता है, कावेरी डेल्टा पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कावेरी रिवर क्या लेके जाती है, हिमालयन रीजन से बहुत सारा सल्ट लेकर जाती है. सो दैट रीजन इज़ वेरी फर्टाइल और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होती हैं. इसलिए कावेरी डेल्टा को क्या भी बोलते हैं, राइस डेल्टा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस ग्रो होता है. तो दैट इज़ द राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया. The islands. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. The island groups of India consist of the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. Now island क्या होता है, island एक ऐसी जगह होती है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है. You can see in the picture that at your left hand side is the Lakshadweep and the right hand side is Andaman and Nicobar. See, the capital of Lakshadweep is Kaveri and the capital of Andaman and Nicobar is Port Blair. So these are the islands of India. So you can see here that the Andaman, Nicobar and the Lakshadweep are all over surrounded by sea. So a piece of land or a land which is surrounded by sea is known as island. Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands are a group of about 300 islands. This island group is one of the Union Territories of India. Its capital is Port Blair. The islands are covered with dense forest. Only a few of these islands are inhabited. Now, in Andaman and Nicobar, कैसे बनते हैं ये आइलैंड्स, ये आइलैंड्स कम से कम 300 आइलैंड्स के ग्रुप से बने हुए हैं. दैट आर अंडमान एंड निकोबार. मीन 300 आइलैंड्स को कंबाइन करेंगे, जो हमें आप में वो छोटे छोटे दिखते हैं, सबको कंबाइन करके क्या बनता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब ये आइलैंड क्या है, ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं. तो यानी इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही यहाँ के डिसीजंस लेती है. नाउ यहाँ की कैपिटल क्या होती है, कैपिटल है यहाँ की पोर्ट ब्लेयर. और यहाँ पे सारे जो आइलैंड्स है वो किससे कवर्ड है, जंगल से. बहुत घना जंगल है यहाँ पर. क्योंकि जंगल क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. आफ्टर दैट ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहेबिटेड. यानी यहाँ पर बस कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर लोग रहते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड्स. Lakshadweep Islands are a
group of 36 islands in the Arabian Sea. They lie close to the Malabar coast. Lakshadweep is the smallest union territory. The capital of Lakshadweep Island is Kavitratti. Many of these islands are made up of deposits of the skeletons of some marine animals called coral. Now, लक्षद्वीप आइलैंड कि जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स 300 आइलैंड्स ग्रुप से बने हैं, ऐसे ही लक्षद्वीप आइलैंड्स 36 आइलैंड्स के ग्रुप से बने हुए हैं। कहाँ पर होते हैं ये है अरेबियन सी में। और ये किसके पास पड़ता है? ये हमारी मालाबार कोस्ट के थोड़े से ही डिस्टेंस पर है लक्षद्वीप। क्योंकि यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं, इसलिए ये इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी में आता है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावारत्ती। कावारत्ती यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लैंड्स भी है जो स्केलेटन्स इकट्ठा होते होते बने हैं मैराइन एनिमल्स के, जिन्हें हम कोरल भी बोलते हैं। Importance of the islands. The islands have some of the most beautiful beaches in the world. These islands attract a large number of tourists from all over the world. अब आइलैंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आइलैंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर होते हैं ब्यूटीफुल बीचेस। और ब्यूटीफुल बीचेस किसको अट्रैक्ट करते हैं? बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो इनलैंड हो या फॉरेन टूरिस्ट हो। सो जो आइलैंड्स है दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंट्री, बिकॉज बाहर के लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं, रुकते हैं, वहाँ घूमते हैं, फिरते हैं। सो दीज एड्स अर्निंग टू द economy of the country. Life in the region. State गुजरात। कैपिटल गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। नाउ वी विल लर्न अबाउट कि गुजरात में क्या चीज़ें फेमस है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, कौन से फेस्टिवल फेमस है, किस टाइप का वो लोग कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेन लैंग्वेज गुजराती। वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? गुजराती। गुजराती वहाँ की मातृभाषा है। Occupation, trading, farming and dairy farming. Many people work in textile mills. अब वहाँ पर लोग अलग अलग काम करते हैं। वहाँ पे कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, कुछ लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं यानी काऊ शीप्स वगैरह पालते हैं, और कुछ लोग सिलाई बुनाई के काम में या टेक्सटाइल यानी जहाँ कपड़ा बनता है वहाँ की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब यहाँ पे मेन क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली यहाँ पे अनाज कौन कौन से? ज्वार, बाजरा, कॉटन, व्हीट एंड शुगर केन। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेस। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेस इज साड़ी। साड़ी पहनते हैं यहाँ की लेडीज। और क्या पहनते हैं? चनिया चोली फॉर वुमेन। चनिया चोली इनकी मेन ड्रेस है। देन व्हाट अबाउट मेंस? धोती और चुनरो एंड खेड़ियो और कुर्ता फॉर men. Now let me show you the dress up in a photograph so that you can understand it more properly, that what is khedu or what is chorno. So here you can see that chanya choli is worn by the woman in the both the pictures, and khedu or kurta for men. You can see a frock type kurta which the man is wearing here. So it is the khedu, that frock type kurta. Okay, now major attraction is the kite festival or major attraction, kite festival or Uttarayan. You can see in the picture that how people are engaged in the kite festival. You can see different types of kites in the sky. Popular folk dance, Ras Garba. You can see in the picture that how people are dancing in Garba. People enjoy this get together and dances with their partner doing Garba in a very big circle. Some places to visit: Great Run of Kutch, Gir National Park, Sabarmati Ashram, Kankeria Lake, Rani Ki Vav. Big cities: Ahmedabad, Surat, Vadodara, Bhuj and Jamnagar. You can see in the picture some glimpses are given of the places to visit in Gujarat. So if you go to Gujarat, you must visit Sabarmati Ashram of Gandhi Ji, the Gir National Parks famous for lions, and
Also, Rani ki Vav, that is a very beautiful example of architecture. Some other states in the region, कुछ और स्टेट है जो हमारे इस रीजन में पड़ते हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, these are all southern states. So state गोवा, कैपिटल पानाजी. कैपिटल क्या है गोवा की? पानाजी. मेन लैंग्वेज कोंकणी. वहाँ गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी बोलते हैं वहाँ के लोग. ऑक्यूपेशन फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग. यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं. फिशिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये एरिया कोस्टल एरिया के पास है. मीन्स these people live near the sea. इसलिए फिशिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर देयर. एंड माइनिंग ऑल्सो. माइनिंग यानी ऑयल एक्सट्रैक्ट करना सी शोर्स में से. सो दैट इज ऑल्सो डन हेयर. मेन क्रॉप्स. अब यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी क्रॉप्स होती है? राइस, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड मैंगोज आर ग्रोन. Some minerals are also found in this state, that's are iron, manganese, bauxite. जिनसे आपके for example iron is there. Okay, iron is used in many places. अगर आपको छोटी सी नेल चाहिए दीवार में लगाने के लिए तो उसमें आयरन लगेगा, राइट. इन्हें ये आपके मम्मा को कोई बड़ा सा कुछ लॉकर वगैरह बनाना है तो उसमें आयरन लगेगा. दीज मिनरल्स आर फाउंड हेयर. पॉपुलर फोक डांस झालो एंड फुगड़ी. यहाँ पे एक कैसा डांस होता है जो मेन एंड वुमेन बोथ मिक्सेस अप एंड डू विथ स्टिक्स. सम प्लेसेस टू विजिट: Basilica of Bom Jesus, Goa State Museum, Karangut Beach, Anjana Beach and Fort Agoda. Best cities: Panaji. यहाँ पे बिग सिटीज कौन कौन सी है? पानाजी, मारगांव, वास्को ड गामा. So here in the picture you can see these men are doing the Dharo and Boogie dance with the sticks in their state Kerala. Capital Trivandrum. केरला की कैपिटल क्या है? त्रिवंतपुरम. मेन लैंग्वेज स्पोकन मलयालम. यहाँ के लोग कौन सी भाषा यूज करते हैं सबसे ज्यादा? कॉमन लैंग्वेज मलयालम. मेन क्रॉप्स: राइस, जैकफ्रूट, कोकोनट, रबर, कोका, कॉफी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन हियर. यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस ग्रो होते हैं. मेनली हम पे बहुत सारी क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं. दैट आर कोकोनट, रबर, जैकफ्रूट एंड राइस. पॉपुलर क्लासिकल डांस दैट इज कथकली एंड मोहिनीअट्टम. Popular festival Onam and Vishu. Some places to visit: Kollavam Beach, Munnar, Periyar Tiger Reserve, backwaters at Alpuza. Big cities: Kochi, Ernakulam and Kannur. You can see in the picture two men are there who are doing Kathakali with the used dress up and makeup. And their favorite festival is Onam, means most popular. In this, people are used to do boat race. Many people got up in one boat and many are participating in this. Means बहुत सारे लोग participate करते हैं boat में fill करके and they just blow the boat like air they are blowing. इतनी तेज चलाते हैं कि जैसे हवा चल रही हो. तो यहाँ पे टूरिस्ट विजिटर्स के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था बैक वाटर्स मिलते हैं हमें केरला में. तो एल्पूजा जो बहुत अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है. पेरियार टाइगर रिजर्व है जहाँ पे हमें टाइगर्स देखने को मिलेंगे. एंड कोवलम्बल बीच. एंड मुन्नर इज हैविंग सम लवली ग्रीनरी माउंटेन्स. सम बिग सिटीज. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग बड़े सिटीज से होता है वो है कोची, एर्नाकुलम एंड कन्नौर.